All right. So, hey everyone, welcome back. Welcome back to another exciting video. And in this particular video, I have something very exciting for you. So, in this particular video, I want to showcase a product which is really amazing. And for a vibe coder like me, this particular product is a gold mine. So, you know that AI बहुत सारा code लिख रहा है, AI full stack applications बना सकता है, and AI can actually do a lot of stuff. You can use Claude Code, you can use Codex, and a lot of more tools. बट एक ऐसी जगह है जहाँ पर अभी भी जो एआई है दैट बिकम्स अ बॉटलनेक दैट इज द यूआई डिजाइन। मैंने रिसेंटली बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए हैं। आई हैव बिल्ट विस्पर टाइप, आई हैव बिल्ट द स्काइपिंग एंड और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स आर इन द लाइन and AI is able to do all the functionality, but one thing where I struggle a lot is basically the design. वो डिजाइन नहीं बना पाता है, that design is not production grade, not polished, and that is where this particular product comes into the picture. So यहाँ पर I want to show you this particular product that is Flowstep, and let me show you the demo. Okay, सो फ्लो स्टेप बेसिकली क्या करता है, वो आपके लिए ना यूआई बनाता है। इट जनरेट्स अ यूआई, इट जनरेट्स प्रोडक्शन ग्रेड ग्रेड एप्लीकेशंस ऑफ फॉर यूआई। सो यू कैन सी दैट यहाँ पर हमारे पास कुछ डेमोज हैं। दिस इज द लैंडिंग पेज ऑफ दिस पर्टिकुलर वेबसाइट, एंड इफ यू सी दैट एक्चुअली व्हाट यू कैन डू इज यू कैन हैव कोलैबोरेशंस, यू कैन बिल्ड द यूआईज विद द हेल्प ऑफ एआई। सो एक काम करते हैं, लेट्स क्विकली जंप इनटू द एप्लीकेशन। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक अकाउंट सेटअप कर लिया है। दिस इज द एप्लीकेशन। सो लेट्स से मैं एक एप्लीकेशन बनाना चाहता हूँ। दिस इज समथिंग आई रियली वांट टू बिल्ड फॉर माय सेल्फ, दैट इज अ फिटनेस ट्रैकिंग विद ऑन बोर्डिंग एंड होम स्क्रीन्स। तो मैं अभी रिसेंटली खुद का एक फिटनेस ट्रैकिंग ऐप बना रहा था मेरे खुद के पर्सनल यूज के लिए। एंड एज यू नो द एआई डज द बेयर मिनिमम यूआई, बेयर मिनिमम मतलब सिर्फ वो एप्लीकेशन को चलाता है, बट देयर इज नो यूज ऑफ इट। सो आई हैव रिटन अ वेरी सिंपल प्रॉम्प्ट एंड यू कैन इवन अटैच रेफरेंसेस इफ यू वांट टू, बट राइट नाउ आई डोंट वांट टू अटैच एनी रेफरेंस, बट आप एक पॉलिश एप्लीकेशन के स्क्रीनशॉट्स भी लगा सकते हो। एंड लेट्स जस्ट क्लिक ऑन द जनरेट। So what it will do is it will basically analyze what I have said it and everything. So इसको ये analyze करेगा and based on that it is going to build a mobile application for me. So यहाँ पर मैंने इसको prompt दे दिया है। अब करते हैं हम थोड़ा सा wait. So you can see the animations going on here, how well the animations are going, and अभी ये मेरे लिए generate कर रहा है, and this is actually a iOS mobile using a green theme. Okay, so I really like green color. Everyone knows I like green color, and let's just wait for a while and इसको generate करने देते हैं, and it is generating something. Okay, pretty cool. The AI is actually doing the UI in front of me. Okay, pretty awesome, right? I mean, कितना fast था ये? Pretty awesome. I got two screens. Let's generate more screens. Okay, generate. Okay, generate a timer screen where users can choose a workout. Okay, users can choose a workout and then start timer. Start and stop the timer. Okay, तो मुझे एक स्क्रीन चाहिए जहाँ पर मैं अपना वर्कआउट सेलेक्ट कर सकता हूँ एंड आई कैन बेसिकली डू द स्टार्ट एंड स्टॉप थिंग। ओके, तो वेरी सिंपल प्रॉम्प्ट्स, मैं बस एक बहुत ही सिंपल इंग्लिश प्रॉम्प्ट्स दे रहा हूँ। लेट्स जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। सो यू कैन सी ऑलरेडी इसने डिज़ाइन करना स्टार्ट कर दिया है। सो दिस इज़ वेयर इट इज़ जनरेटिंग। योर डिज़ाइन इज़ टेकिंग शेप। ओके, थैंक यू सो मच। एंड यू कैन सी दैट आई गॉट अ न्यू ब्रांड न्यू स्क्रीन विद द सेम थीम। तो यहाँ पे ये हमारे वर्कआउट्स हैं, दैट इज़ रनिंग, स्ट्रेंथ, साइक्लिंग एंड और भी हैं, एंड दिस इज़ बेसिकली द टाइमर थिंग। Okay. I really like how fast this is. Matlab, this is not a fast forwarded video. You can see I'm talking to you. This is not at all a fast forwarded video. And pretty good. I mean, this is definitely good. आप बता सकते हो मेरे को. This is definitely good. And then at the last, generate, okay, a detailed analytics screen फॉर मी। ओके, फॉर मी। एंड इसके बाद एक और स्क्रीन चाहिए जहां पर ना मैं अपने पीयर्स, अपने फ्रेंड्स को ऐड कर सकता हूँ, एंड वी कैन हैव अ लीडर बोर्ड काइंड ऑफ अ थिंग, दैट कौन कितना एक्टिव है, यू नो, अकाउंटेबिलिटी थिंग। तो एक काम करते हैं, इसके बाद वो वाला प्रॉम्प्ट भी देते हैं। ठीक है, तो मीन वाइल दिस इज जनरेटिंग। सो ऑल्सो डू 3 to 4 screens where i where I can, okay, invite, let me just do it like this way, where I can invite my friends and see the leader board.
So this is basically what I want. Okay, so let's just wait for a while. Oh, this is I really like this. I really like this particular thing. Okay, तो एक काम करते हैं. Let's just wait for this particular thing to finish. You can see that we are getting a detailed screen on the analytics part, and I really love the UI. Okay, and let's just wait for a while, putting pieces together. That's great. सो यू जस्ट प्रॉम्प्ट एंड यू जस्ट गेट एवरीथिंग राइट. एंड आप एक एलिमेंट को सिलेक्ट करके भी उसको एडिट कर सकते हो, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा. सो लेट जस्ट आई एम जस्ट वेटिंग फॉर इट टू फिनिश. ओके, दैट्स प्रिटी ऑसम. ओके, इट्स अ लॉन्ग स्क्रीन. यू कैन सी वी हैव कैलोरी क्रशर, वी हैव पर्सनल बेस्ट, this particular thing, and at the end I can just give it one more prompt. This is going to be my last prompt because I can see मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी स्क्रीन्स आ चुकी हैं यहाँ पर. ठीक है, थोड़ा वेट करते हैं. लेट्स जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल. सो 4 स्क्रीन्स इट इज़ जनरेटिंग फॉर मी. एंड जस्ट लुक एट द स्पीड. जिस स्पीड से ये कर रहा है ना, आई मीन इट्स रियली ऑसम स्पीड. ओके, सो अभी देखना है 4 स्क्रीन्स है, कितनी क्विकली इसको जनरेट करेगा. दिस वीडियो इज़ नॉट एट ऑल फास्ट फॉरवर्डेड. आई एम रियली इम्प्रेस्ड. पर्सनली आई एम रियली इम्प्रेस्ड बिकॉज़ अभी मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्लॉड से वाइप कोड तो कर ही सकता हूँ, बट आई गॉट द डिज़ाइन पार्ट सॉर्टेड. तो मैं डिज़ाइन्स इससे जनरेट करके आके आई कैन गिव माय क्लॉड दैट हे यू हैव टू बिल्ड दिस पर्टिकुलर डिज़ाइन. So let me tell you some more advanced features also. So let me just skip the video ahead. So you can see that this is what it has generated, right? तो यहाँ पे ये मेरा leaderboard है, screen 5. Then we have the invite, we have your personal profile, and here. So this is basically how you can generate so quickly these many screens for a fitness application. अब मैं क्या कर सकता हूँ? See, I can even edit these screens. ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ AI. I can choose them, I can edit, I can export it to a Figma. I can use the edit. एंड यहाँ पे मेरे पास कुछ prompts है. For example, switch to dark, make a dark mode, make it pretty, try a different layout. फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई कैन डू इज क्रिएट एन एरर स्टेट. ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसका एक वेब वर्जन भी बना के देखते हैं. सो लेट्स से ये पर्सनल मेरी फेवरेट स्क्रीन है, सो आई कैन जस्ट से एडिट. एंड मुझे ना क्या चाहिए, मुझे इसकी एक एरर स्टेट चाहिए कि अगर लेट्स से फॉर सम रीजन हमारा सर्वर डाउन है, लेट्स से राइट. सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन बेसिकली से यार अगर एरर हो रहा है तो वो कैसा दिखेगा. सो लेट्स सी हाउ द एरर पार्ट लुक्स. तो मैंने ये वाली स्क्रीन को सिलेक्ट किया था 4 को. एंड इफ सर्वर इज डाउन, व्हाट शुड द एरर स्टेट लुक्स लाइक. सो यू कैन सी इट इज गोइंग टू जनरेट दैट. एंड when you select something, you can see all the properties with generated code. I mean, if you see right here, you have a code generation as well. आपको बस यहाँ से copy करना है. The code always remains in sync. That means मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ, राइट. दिस इज माई स्क्रीन. यू कैन सी द फुल रिएक्ट कोड इज इन फ्रंट ऑफ मी, जिसको मैं कॉपी करके अपने क्लॉड को दे सकता हूँ. सो आई कैन जस्ट कॉपी द कोड फ्रॉम हियर एंड आई कैन जस्ट गिव इट टू द क्लॉड एंड क्लॉड इज गोइंग टू जनरेट दैट. pretty pretty amazing. So you can see this is the error screen and yeah, really clean actually. So click करो. ठीक है, अगर आपको ये Figma में चाहिए, you can just export it to a code, you can export it to a Figma, you can even download it as a PNG. and अगर इसको हम export करेंगे Figma में, तो I have to of course connect my Figma. तो मैंने अभी Figma connect नहीं किया, but I get a Figma out of it. And then I can even connect my Claude to the Figma and उसको मैं बोल सकता हूँ कि यार इसको generate कर दो. So this is the future of actually how you design AI applications, right? And honestly, आई जस्ट लव दिस प्रोडक्ट. तो अभी मैं फ्यूचर में जितने भी प्रोडक्ट्स अभी मैं बनाने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू यूज दिस अ लॉट. सो दिस वाज योर फ्लो स्टेप. सो ऑल द लिंक्स विल बी अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. एंड देखो यार, मैंने पूरा रॉ डेमो आपको सामने दिया है स्क्रीन पे. डू लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस प्रोडक्ट. एंड अगर आप कोई भी एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हैं ना, एक बार इसको ट्राई जरूर करना. जस्ट गिव इट अ शॉट एंड यू विल बी अमेज्ड. ओके, एंड थैंक यू सो मच फ्लो स्टेप फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो. Apart from the sponsorship, I really like your product. So thank you so much for this amazing product. All the relevant links आपको नीचे description में मिल जाएंगे. So check करना flow step को. So with that, let's end this video. Let me know your thoughts below in the comment section. And video अच्छा लगा तो like and subscribe जरूर करना. मिलते हैं हम आपको next video के अंदर. Until then, bye bye and take care.